So, welcome you all for the class. Good afternoon, everyone. Still, I think students are coming slowly. It's taking very much time. Good afternoon, everyone. So, we are starting here with chapter 3, part 3 session. That is linear equation with two variables. Yeah, last time we discussed elimination method and substitution method. Here we will continue with elimination method and some different type of questions with slight change in the method, but maximum times we will be using elimination method here. So let's take down the example. Okay. Now you could see the question. It is a linear equation with two variables, but if you see the coefficients here are with decimals, and we have seen that like as soon as it comes with the decimals you get bit hyper and you feel, oh, very difficult question. Now simply look at the question. What does it say? So yes, welcome you all for the class. Join it quickly please. So look at the question. It is with one decimal point. Okay, so what is the easier way of doing it here is, let's get rid of decimal. How to do that? So you know the simple way of doing it is multiplying by 10. Both equations. So what do I get when I multiply this by 10? I get rid of the decimals. So it becomes 3x plus 4y is equal to 10. Here multiplying by 10, I get x minus y is equal to 1. Isn't it a simple equation now? You all know how to solve the equation, isn't it? So when the questions are given here, like some complicated form, you don't have to worry or you don't have to get hyper. You have to just look at the equation and try to make it simpler. So here we made it simpler with multiplying by 10, and you all know how to do this. So let's do it quickly. If I take this as equation 1 and 2, any easy is multiplying by 4. I've already solved these elimination method questions in my previous class. So those who have not watched it, kindly go through the lesson and understand the concept. So here we try to eliminate one of it. So multiplying by 4 to equation 2. Okay, so what do I get? The first one as it is, 3x plus 4y is equal to 10. And second equation, when it is multiplied with 4, we get something like this. Okay, so we get this as 7x. So you get this as x is equal to 14 upon 7. So that is nothing but x is equal to 2. And now using this value, x is equal to 2 in equation 2. Because that becomes very simpler for me. So I'll try to use that. So 2 minus y is equal to 1. If I bring this y here, it becomes positive. And so the 1 becomes negative here. We get this as y is equal to 1. And hence we get the solution set is equal to first x then y. So 2 comma 1. I hope I'm very clear at it. Yes. Thanks a lot. And now we go with another method here. Like it's elimination method, but just questions are asked in a different way. So we'll try to follow different steps here. Okay, now let's take on a different question here. It says, okay, and one more question I'll copy it down. We will do it later. Okay, because the space becomes the issue here. Now, look at it.
what type of questions you're getting here. Now here you will say, ma'am, it is the same way, numbers are given. But if you see the coefficients here, would you could see the coefficients are quite big, isn't it? When it comes to multiplication, it gives you bit complex form. Okay, so there is a particular way of doing the sum here. Whenever आपने देखा इसके पैटर्न क्या है क्वेश्चन की, I'll clear your doubts later, children. I'll definitely discuss with you. So आपने यहाँ पे देखा होगा, look at the question please. 41x minus 17y is equal to 99. 17x minus 41y is equal to 75. Just look at the pattern. So if you have observed, look at the question. What does it say about the coefficients of x and y? तो आपने देखा यहाँ पे coefficient of x क्या है 41, यहाँ पे क्या है y का coefficient, okay, minus 17. If I take the numerical value, it is x 41 and your 17, and वही exchange करके यहाँ पे हो गया है x का 17 and y का 41. Did you see this? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी तो मैंने बहुत छोटा नंबर लिया है, we will take some bigger numbers also, very big coefficients. तो वहां पे multiplication is a very tedious job for us. तो यहाँ पे एक पैटर्न करेंगे हम क्या करेंगे? We are going to use elimination method, but before that we will try to make equations simpler. Please children, just look for it. Many a times this type of questions comes in the exam when it comes for solving. आपने ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपको भी बताया, क्या बताया कि x और y के कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुए हैं दोनों इक्वेशन में. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मेन दैट इज इक्वेशन 1 and 2. पहले आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सिंपली यू हैव टू add those two equations. Okay, so if I add these two equations, 41x minus 17y, adding 1 and 2, so what do I get? 17x minus 41y is equal to 75. So if I add this, what do I get? 58x minus 58y is equal to 174. ठीक है? Now, please listen to me. What will happen? अब आपका कि मैं बहुत बड़ा बन गया. But in this type of question, कब? जब एक दूसरे के एक्सचेंज में जाएंगे, they are you can see both the equation, वहाँ पे कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे हैं. तो इस टाइप के इक्वेशन में पहला आपका स्टेप क्या है? You will add both the equation without even making any changes in the coefficient. You will just add the equations. तो जब आप इस इक्वेशंस को ऐड करते हो तो आपको कुछ और एक नया इक्वेशन मिलेगा x और y में, और हमेशा ये रिड्यूसिबल होगा. रिड्यूसिबल मतलब आप कुछ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, जस्ट 58. ओके, तो आई ट्राई दैट इज इट अ मल्टीपल ऑफ 58. Correct? So what will we do? We'll make this equation simpler by मैं दोनों तरफ क्या करूंगी, 58 से डिवाइड करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x y. ओके, और यहाँ पे 3, और ये इक्वेशन मेरा होगा नंबर 3. समझ में आया मैंने क्या किया? तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किए और कुछ कॉमन से डिवाइड किया. ये आपका कॉमन स्टेप होगा जो आप फॉलो करोगे. नाउ अब आप कहोगे मैम एक और नया इक्वेशन आ गया. नाउ आई नीड वन मोर इक्वेशन. इसमें मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो सेम वे 41x minus 17y, 99, 17x minus 44y is equal to 75. और इस बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सारी साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है, पहले हमने क्या किया, ऐड किया, फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सो 11 minus 7, 4, and यहाँ पे 3 minus 1, 2. So what do we get this as, 24x. Similarly here, 1 negative, 1 positive. So 14 minus 7, so you get the same this as 24. Am I right?
Is it clear to you? And अब आप देखोगे, okay, ओके एंड अब आप जब देखोगे तो यहाँ पे हमें फिर से क्या मिल रहा है, 24x प्लस 24y इज इक्वल टू 24. सो वी डू यहाँ पे डिवाइड बाई 24 on both sides. So what do we get this as? X plus y is equal to 1. तो ये मेरा बन गया fourth equation. I hope this is clear to you. ओके सो मैंने पहले क्या किया, जब ये कोएफिशिएंट एक्सचेंज में होंगे तो पहले मुझे क्या करना है, ऐड करना है एंड सम डिवाइड करूंगी सब कॉमन कोएफिशिएंट से, तो मुझे एक सिंपलर इक्वेशन मिल जाएगा. उसी तरीके से मैं दूसरी दोबारा ये इक्वेशन यहाँ पे लूंगी, सब्ट्रैक्शन करूंगी, अगेन कुछ कॉमन मल्टीपल मिलेगा, मैं डिवाइड करूंगी एंड आई गेट न्यू इक्वेशन. सो दिस इज द वे वी गेट न्यू इक्वेशंस, पेयर ऑफ न्यू इक्वेशंस. और अब इन दोनों को आप करोगे तो ये हमेशा इतने सिंपल ही रहेंगे. सो व्हाट डू यू गेट दिस एज, x plus y is equal to 1 and x minus y is equal to 3. So when you cancel it, you get this is 2x is equal to 4. So we get this as x is equal to 2. और इसको कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए आप, यूजिंग इन से इक्वेशन हम 3 और 4 सिंपल ही लेंगे, ठीक है. सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया इन इक्वेशन 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 plus y is equal to 1, यानी कि y is equal to 1 minus 2, यानी कि y is equal to minus 1. And hence we write, see आप जैसे कि अभी यहाँ पे लिखते हैं, चलिए therefore x is 2, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, therefore x is 2 and y is minus 1. इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं. सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो राउंड, यदि आप ब्रैकेट में आंसर लिख रहे हैं तो प्लीज राउंड ब्रैकेट यूज करिएगा. अदरवाइज नाउ अकॉर्डिंग टू आवर न्यू टेक्स्ट बुक देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू राइट द आंसर इन राउंड ब्रैकेट. पहले था सिस्टम में कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट है, सो वी आर यूज्ड टू दैट पैटर्न, बट यू कैन राइट द आंसर एज 2 and y is equal to minus 1. So that is the way possible. So let's take one more example like this. I hope you have understood the pattern. So I'll take one more example, children. But then many are joining late, so please go through the classes once again. Attend the whole session so you understand the concept well. Okay, so please, it's a kind request, and I go on making the same request again and again, so that you try to understand the importance of the class. Okay, now look at this number, 217x plus 131y is equal to 913. Second equation is 131x plus 217y is equal to 827. Could you see the equations? Now here, I know generally it happens that when we go with a smaller number of children, say that no, I can multiply this. I can do it by elimination method की coefficient equate करके, ठीक है. But अब यहाँ पे आप देखोगे, so it comes with 3-digit numbers also. The coefficients are quite big, and it's very difficult for us to go with such bigger number multiplication. So यहाँ पे naturally you have to go with the pattern I suggested you. So क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. We get some common factor, divide it and make the reduce the equation in some simpler way, something with x plus y or x minus 1. So that you get it as equation number 3. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे, 1 minus 2 यानी कि equation 1 minus equation 2 यानी कि subtraction करोगे, और फिर subtraction करने के बाद फिर से आपको कुछ common factor वाला मिलेगा. You divide it and something with x and y is again you get second equation, that is your fourth equation actually. और फिर जो दो नए equation मिले हैं उससे आपको सिंप्लीफाई करना है बाय एलिमिनेशन मेथड. सो यू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल और फिर सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल. सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट. सो लेट्स डू इट क्विकली. सो एडिंग 1 and 2, you get 217x plus 131y, 913, 131x plus 217y is equal to 827. So it is 843
1740. Okay, so now if you do this multiplication again, so naturally 340x plus 348 what? Dono 348. So naturally it is understood to you that okay, I have to divide by 348. So let's see 1740. So 8 fives are 14 आता है. So let's check it. 348 fives are 0. 4 fives are 20. 24 2 carried. 3 fives are 15 plus 2 17. Yes, correct. So naturally it is divisible by 348. So divide by 348 on both sides. So what do we get? X plus y is equal to 5. And this is our equation number 3. I hope it is clear to you now. Then what's the pattern now? What is the next step? We have to do subtraction. So equation 1 minus equation 2. So what do I get it? 217x plus 131y is equal to 913. 131x minus plus 217y 827. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें? लेट्स सी. सो 7 minus 1 6, 11 minus 3, so we get this is 8, so that is 86x. This is bigger, so we get subtraction sign. Same मुझे यहाँ मिलेगा 86y is equal to, this is bigger, this is smaller, so we get this as positive. 3 minus 7, that is 13 minus 7 6. Borrow it from here, so you get it 10 86 and hence, so again you got it. Divide by, same step आपको करना है. Divide by 86 on both sides. So what do you get? X minus y is equal to 1. And this is equation number 4. So did you observe the pattern? हमने दो sums किए. आपने देखा वो सेम पैटर्न फॉलो होगी, इसमें हमेशा ऐसे ही होगा. यस, यू माइट बी कि मैम ऐसे नहीं हुआ, तो जनरली ऐसे नहीं होता. मींस यू गेट इट सम सिंपलर नंबर लाइक दिस. So please don't go by any other method. Just follow this pattern and solve it by elimination method. So now solving 3 and 4. What do you get? Add 3 and 4. What do you get? X plus y is equal to 5. X minus y is equal to 1. We cancel. X is 3. And then use it in any equation. So using into, what do you, in 4, sorry. So if I use it here, 3 minus y is equal to 1. And therefore 3 minus 1 is equal to y. So we get y as 2. So x is 3 and y is 2. It is our solution. Got it everyone? Did you get the pattern? Okay, तो एक चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है इस टाइप के सम्स में कि देखिए आपने पहले तो दो बेसिक मेथड अभी सीखी है, या अभी तक हमने जो सीखा है वो, there are two methods which we have learned. One is elimination method and one is substitution method. ठीक है, मैक्सिमम हम यदि हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो we always prefer to go by elimination method, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइप में होगा आपका. ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड में जो सिंपल है तो क्या करना है आपको? एलिमिनेट करना है. मतलब आपको क्या करना है? बेसिकली एक वेरिएबल को आपको निकाल देना है. ओके, सो जब हम एक वेरिएबल को निकाल देते हैं यानी कि डिलीट कर देंगे तो हमारे पास एक ही सिंपलर इक्वेशन मिल जाएगा. और उसे करने के लिए हमें क्या करना है? तो वी हैव टू लुक फॉर द कोएफिशिएंट्स व्हिच आर सेम. ओके, यदि दिया हुआ है डायरेक्टली तो ठीक है, वरना नहीं दिया है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट द वेरिएबल्स हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू. उसके बाद आप क्या करोगे? आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे. ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ओके, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी. उस वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में, मतलब दो में से एक जो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया होगा वहां पे रखेंगे. सो वी गेट द अनदर वैल्यू. ओके, ये एक टिपिकल वे है जो एलिमिनेशन मेथड फॉलो करता है. ठीक है, बट इस टाइप के कॉन्सेप्ट, जैसे फिर मैंने डेसिमल वाला एग्जाम्पल लिया, तो डेसिमल वाले एग्जाम्पल में आपको क्या मल्टीप्लाई बाय 10 करके पहले सिंपल बना दीजिए. 10 या 100 जो भी एप्लीकेबल होगा, एंड देन मेक इट सिंपलर एंड देन फॉलो द सेम मेथड व्हिच आई टोल्ड यू बिफोर. फिर मैंने ये जो पैटर्न बताई इसमें क्या था स्पेशल कि आप देखोगे कि उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स जो है वो इक्वल है, मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं.
isn't it? x का कोएफिशिएंट y को जा रहा है, y का कोएफिशिएंट x को जा रहा है, तो आपको क्या पैटर्न फॉलो करनी है? आई होप यू आर क्लियर विद दिस टू एग्जांपल्स. पहले ऐड, फिर डिवाइड करके कुछ सिंपलर, फिर सब्ट्रैक्ट, देन डिवाइड करो कुछ नंबर से एंड यू गेट सिंपलर इक्वेशन. फिर जो दो नए इक्वेशन मिले उसको हम सॉल्व करेंगे. सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. I hope I'm very clear with this. Okay. I think somebody is writing here. Okay, so the doubt is clear, I hope. Okay. So 2x, Ashutosh, I think she has already clear x and x. We are adding the equation. So x and x becomes 2x. Fine. Okay. अब elimination method में इसमें बहुत सारे sums है. Today I'll take some questions on simpler numbers only. तो यहाँ पे ये numbers के साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे application में जा रहे हैं and I'm taking down one question. Okay, so pay attention with that. Okay, now the question becomes, so I've already sent the worksheet and necessary corrections. I have done it in it. So kindly solve the sums, okay, with the proper correction. So I hope there is no confusion from that point of view. Okay, just 1 second. I'm just getting the questions. I kept it ready, but let's change them. Okay, so we will take a question now. Okay, now let's see the question here. What does it say? Okay, it says that px plus qy is equal to p minus q and qx minus py is equal to p plus q. Okay, where this p and q are real numbers. तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, पर जो कोएफिशिएंट है वो p और q के फॉर्म में है और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है x एंड y. तो जो भी हमारा आंसर है हमें फाइंड करना है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ p q या जो भी आता है वो. तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? सेम. आई रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली गो विद एलिमिनेशन मेथड ओनली. ट्राई टू यूज इट बिकॉज इट विल बी सिंपलर. उसके बाद आप दूसरी एक दो मेथड और सीखोगे, देन अप टू यू टू चूज इट, बट आई वुड एडवाइज यू दैट यू गो विद एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड हमें क्या कहती है कि हमें इक्वेट करने हैं. तो वी विल गो विद, अब आप यहाँ देखोगे तो px plus qy and qx minus py. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगी, that I'll try to use elimination method simply. Directly I will go with elimination method. तो suppose यहाँ पे इनके ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, so I multiplied यहाँ पे यदि equation 1 multiply equation 1 by p and equation 2 by q. ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना ये अल्फाबेट्स हैं इसलिए, so that you don't get confused. So p से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, so p into p, p square x. ठीक है, then p into q, so plus p q y is equal to p into p minus q. इस फल को p minus q को हमें p से मल्टीप्लाई करना, तो फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट में रख रही हूँ. उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को हमें किससे करना है? p से करना है. इक्वेशन 2 बाय, यहाँ पे हम p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ हम q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. ओके, तो अब यहाँ पे मैं q से मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? q स्क्वायर x माइनस q इंटू p, यानी कि माइनस पी क्यू. आपको पता है यहाँ पे मैं क्यू पी लिखूँ या पी क्यू लिखूँ, इट्स द सेम थिंग, इज इक्वल टू p प्लस q को हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर नॉट नंबर्स, टर्म्स है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ठीक से ध्यान रख के आप सॉल्व करिएगा. Now already signs are opposite, so then we will add them. Adding, so what do you get on adding? Come on, tell me. Add, so p square x plus q square x. मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए
इस तरीके से लिख रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने वर्कशीट में ऑलरेडी इस टाइप के सम सॉल्व करके आपको भेज दिए। आप देखोगे यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई, और एक्चुअली इट गेट्स कैंसल्ड, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो आप देखोगे इट इज पी इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब यहाँ और यहाँ थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है, यहाँ पे हमें x कॉमन लेना है, सो व्हाट यू गेट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो p इंटू पी पी स्क्वायर, p इंटू क्यू पी क्यू, प्लस साइन है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, q इंटू पी यानी कि प्लस पी क्यू, q इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बच रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लाइक अ टर्म, और ये डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे नीचे लाया, आई मीन ये टर्म मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाया, सो सॉरी, सो व्हाट डू आई गेट, इट गेट्स कैंसल्ड एंड आई गेट x इज इक्वल टू 1। ये स्टेप समझ में आया? प्लीज काइंडली गो थ्रू इट क्विकली एंड लेट मी नो इफ एनी डाउट इज देयर। आशुतोष चेक इट, if कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, अथर्व या देयर, आई थिंक आई हैव सीन हिम, ओके क्विकली राज। आप लोग देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आप इक्वेशन देखोगे तो नंबर्स में नहीं है, राइट? यस यू कैन जानवी, बट बाकी सबके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और सम बहुत लंबा हो जाता है, सो ऑलरेडी विद पी एंड क्यू, तो इस टाइप का जब अल्फाबेटिकल आता है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू डायरेक्टली गो विद एलिमिनेशन मेथड, ओके, क्योंकि हमेशा नहीं आएगा ना, बिकॉज मैं ये जो मेथड सिखा रही हूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे हम एल्जेब्रिक वैल्यू ले रहे हैं, मतलब विद पी एंड क्यू एंड ए एंड बी, इसलिए मैंने वो टिपिकल मेथड ली है, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द पैटर्न। आपने पहले वाली मेथड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड जानने का क्वेश्चन क्या है, कि यहाँ पे P और Q है और यहाँ पे Q और P है, मतलब कि प्रीवियस मेथड हम यूज कर सकते हैं क्या? तो यस यू कैन यूज इट, बट मैंने ये सम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न के लिए सिखाया है, इसलिए मैं वो मेथड इसमें फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे सम्स आएंगे जिसमें ये ऐसी पैटर्न नहीं हो, तो कैसे करना है, सिंपल एलिमिनेशन से करना है। तो हाँ, ये पर्टिकुलर सम आप पहली वाली पैटर्न से भी कर सकते हो, उसके पहले जो भी हमने किया उसमें भी हो सकता है, ओके। यस इट हैज, मतलब ट्रिकी, मतलब जैसे अब कहूँ कि थोड़ा सा आपका अलजेब्रा का नॉलेज फिर से यहाँ पे टेस्ट होता है, फाइन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो x इज इक्वल टू 1 आ गया, आई होप सबका बच्चा p इंटू पी क्या होगा, p स्क्वायर ही होगा ना, मैं यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये y का कोएफिशिएंट इक्वल लाना है, ओके, तो यहाँ q है यहाँ p है, तो मुझे यहाँ पे p से मल्टीप्लाई करना है तब जाके इक्वल होगा, और यहाँ पे पूरे इक्वेशन को नेचुरली हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेचुरली p इंटू p क्या होगा, p स्क्वायर, ओके। Will the value of x will always be equal to 1? No, 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 nothing like that. It's not like that. It depending on the question. It's not always 1. Okay? It's not necessarily 1. It could be with p by q or 1 by p. There are some questions where you get, say, like a or b में questions हैं, तो उसमें आपको x is equal to 1 upon a and y is equal to 1 upon b. ऐसे भी answers आ रहे हैं. Okay, so there is no such rule that you always get 1 and minus 1. मुझे पता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 minus 1 is very common answer, but I won't say that it is always. Okay, so let's continue with the sum using x is equal to 1. So we can check any of the state equation. Let's take it 1. So I get p into 1 plus qy is equal to p minus q. So what do we get? qy is equal to p minus q. ये p बन सा p, तो वो इस तरफ आ गया तो माइनस p, तो what do you get? p माइनस p कैंसिल हो गया और बचा क्या? माइनस q. So y is equal to minus q upon q. So y is equal to minus 1. So we get the value of x as 1 and y as minus 1. So we get our solution set as 1 comma minus 1. I hope it's clear to all of you children. Okay, तो आज के आपने सम्स देखे, we not only with the decimal form, then मैंने जो करवाया दूसरा वो आपको करवाया with particular pattern, and this is with the alphabetical. तो मैंने corrections भी worksheet का डाल दिया है, fine. तो इस टाइप के questions करने हैं, right? And I would like कि अभी see I'm not aware that there would be exactly vacation और कुछ भी announce किया. So if you don't mind, I can take your class in the next coming days.
So please let me know that if it is possible for you to take the class tomorrow. Okay, so please मुझे बता दीजिएगा. If you are interested, then we'll try to finish this different types of method here. At least elimination में जो दो और sums बचे हैं type. So at least I would like to take 1 or 2 classes. So please let me know in the group what is possible. Please put your attendance without fail. Okay, and if any doubts, either you write here. If you have liked, definitely you can show your thumbs up here and subscribe it. अदरवाइज आपको एक चीज करना है दैट एनी केस ऑफ डाउट यहाँ जो अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो लाइक माय चिल्ड्रन डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म करोगे. अदर्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन हियर. ओके, डेफिनेटली आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस. थैंक यू चिल्ड्रन, and please put the attendance without fail.